This vlog is super special to me. We attended the IIFA awards in Abu Dhabi and the experience feels unreal. So I wanted to take you along and share all that I can with you guys because you guys are my friends and I wanted to share this with you. So come along and hopefully you enjoy this vlog. I'm ready. Let's go to Abu Dhabi. These are times they won't last forever, but I know that you've been scarred. There's nothing we can't have together. You know you got my... Guys, we are in Abu Dhabi. For IIFA awards, right? Diksha, who are you excited for? Shahrukh Khan, I'm very excited. I hope so he comes. As soon as we land, we do this. We are dead. नासिर जी ने अभी आके हमें सरप्राइज करा है. क्या बोला नासिर जी आपने? मैं शॉक हो गई. मैंने कहा कौन बोल रहा है? But he's from Pakistan. हिंदी आती है उनको. But our car is here. Healthy breakfast you probably can't see, but this is what I'm having. And मेरा डोसा आ रहा है. Nothing can make me go apart. This is our room. This is my sister. Oh wow, cute room. And then we have this view here. We have a balcony also. And this is our bedroom. Then we have a balcony there as well. And then we have 1 second. Light कहाँ से on होगी दीक्षा? इधर से होगी. You idiot. Guys, and this is the washroom. And that's my room tour. Oh नहीं, यहाँ पर भी है guys कुछ. We have a closet area. Oh, dressing area here. Nice. Hi guys, I just freshen up you. I have sunscreen and everything on and protected. And हमारी एक नीचे मीटिंग है ईशा आर्य रूम से. हम नीचे मीटिंग अटेंड करेंगे. Then the makeup artist is gonna come. Right now it's 4:15. मीटिंग खत्म हो जाएगी आधे घंटे में. And then I think the makeup artist is gonna come around 5:30 and we have to leave by 7. That's the plan for the day. Let's go. I got my dress यहाँ पर deliver हुई है. I'm gonna try. और jewelry पड़ी है उधर. Let's see. This is the outfit that we are working with. मैंने ट्राई करा था. मैं ये बैकअप की तरह लाई थी क्योंकि आज डिलीवर हुआ है. मैंने ट्राई भी नहीं करा था. बट आई थिंक दिस इज लुकिंग pretty good. I can do something with it. One thing, I can't remove this because this was so difficult to get in. मैं इसको remove नहीं कर सकती guys. अब इसी में makeup कराना पड़ेगा. I'll wear a bathrobe over it so that ये सही रहे. But I love it. I have the dress on, bathrobe on, but the makeup artist is gonna be here in like 5 minutes. So I'm really excited for the makeup. I don't know what I'm gonna do. Like I have something in mind, but like I'm gonna talk to her. And usually हमेशा ऐसे ही होता है जब भी like we work collab with makeup artist और photographer. हम दोनों के mind में कुछ होता है and हम decide करते हैं on set. तो वो कुछ और बिल्कुल completely different decide हो जाता है. So I'm really excited. I think I can do dark smoky eye or something because the dress is very neutral plain. So let's see. Diksha, what do you think I should do? Not responding. So I wanna know who hurt you, who made you feel like that. I wanna hurt them back 'cause I love you. I can't stand to see you sad, baby. It drives me mad. I fight all your enemies. Yeah, I'll be there endlessly for you, for you. लाइफ में हो नो इशू जब हो फराह खान का टिशू. This was the outfit. I loved it. I've removed my heels, but this is the outfit. I absolutely love it. I wasn't really sure about it, but like I got so many compliments today, and I was actually feeling it. I think मैं जब pictures वगैरह में देख रही थी बहुत pretty लग रहा था. I met a lot of people from Delhi also guys. ये dress पहनने के लिए बहुत मुश्किल हुई थी. मैंने ये tube top डाला हुआ था. And I was like Diksha, I can't wear this dress again because ये बहुत tough था पहनने के लिए. तो मैंने ये actually rip करी है अपनी ट्यूब टॉप just so I can wear this dress.
and it was all worth it. We were so tired. It's 1:30 और हमने सुबह breakfast करा था 9 o'clock. But it was fun. It was fun. We had a good time. And now I'm gonna order food and I'm gonna see you there. I'm feeling the outfit and the makeup now. I changed and I feel amazing. I'm so excited to order food. Sissy ने भी change कर लिया. बड़ा मुश्किल था उस outfit से बाहर निकलना. Let's go. मुझे makeup भी remove करना है. But पहले हम खाना order करेंगे. Let's go. Sissy, I can't find the menu. There's the menu. Hi, I wanted to order food. What's the number for that? What do you have in vegetarian? Dal makhani, that's it. That's the only option available in vegetarian. The food is here. We have thali. God, lavish. बहुत भूख लग रही थी. We have dal makhani. We have biryani. We have sandwich. दाल मखनी नहीं है, दाल है. दाल है. Tomato है, Sissy. No tomato. Sorry. Let's dive in, guys. I can't wait. It's breakfast time. I have to do. I climb every mountain, no matter what they put me through. I don't care what happens. Guys, it's a new day. I just got back from the gym and the makeup artist is here. I'm gonna take like 10 minutes to just freshen up and tab tak Deeksha kar rahi hai. But today is the final night and I'm so excited for IIFA night. Let's get ready. I'm wearing this very pretty green dress and I'm so excited to show you. But wait, okay. I'm ready, guys. Let's go get ready and I'm gonna be fully glammed. But this is how I look. This is the real me, guys. Meet Anna. We're gonna start our makeup. Running late. We're gonna quickly start and we have something in mind. We're gonna use these two colors, this one and this one. And you're excited. No, nothing could make me go. Guys, makeup and hair is done. I look like a different person. This is what I'm wearing tonight, guys. बहुत ही बेकार joke था, but I have my dress lying here somewhere with Diksha's makeup and hair. Diksha, lovely. So I wanna know. Guys, we are ready. Are you ready for it? Taylor Swift song मेरे mind में चल रहा है अभी, guys. But this is my outfit. I love it. मैं ऐसे में लग रही Cruella. Azim और शान शहंशाह का mixture. Cruella और अजीम और शान शहंशाह का mixture. Deeksha is posting her stories. जब भी हम ऐसे बाहर इवेंट्स वगैरह पे आते हैं ना तो हमेशा ऐसा होता है कि उसी डे पर पोस्टिंग्स वगैरह करनी होती हैं और उस डे पे शूट वगैरह करना होता है सब कुछ. तो हमेशा ऐसे ना कुछ चल रहा होता है. एंड जब भी मैं 2 मिनट के लिए भी फ्री होती हूँ, जैसे मैं हेयर स्टाइल वगैरह कर पाती थी तो मैं फ्री थी उस टाइम पे. मैं सोच रही थी कि क्या रिकॉर्ड करूँ, किधर कैमरा रखूँ, वीडियो के लिए यूट्यूब के लिए लूँ, इंस्टाग्राम के लिए लूँ, क्या उनके लिए स्टोरीज लूँ. बट यार दिस हैपेंस, बट आई एम सो ग्रेटफुल. एंड आई डोंट नो, मेरे को आज बहुत ऐसे रियलाइजेशन सी हो रही थी एंड आई वाज जस्ट फीलिंग too grateful. Yes, shit happens and there are a lot of things that didn't go wrong in my life, but I feel like I'm so grateful where I am in my life right now, mentally, physically. काफी emotional moment हो रहा, but I'm so grateful for you guys also. Just so sweet and I'm just so blessed to have this community. You guys are so positive and so uplifting. So this one's for you. And आज मैंने IIFA की post डाली थी. All of you guys were cheering us so much. ऐसे actually ऐसे लगता है कि कोई अपना है जो आपके लिए cheer कर रहा है. And I'm just so grateful. That's one thing I wanted to say. and मैंने पूरा भाषण दे दिया, but यहीं पर मेरा स्पीच समाप्त होता है. गाइस, मैंने ना वो डाला हुआ है, स्पैंक्स नहीं है, मैंने कहाँ से लिया था, मैंने आने से पहले 1 दिन पहले शॉप करा था. मुझे कल जो मैंने ड्रेस डाली थी ना वो सी थ्रू थी, तो वो ट्यूब मैंने लिया था. एंड क्या बोलते हैं उसको यार, जो स्पैंक्स जैसा होता है, समझ गए सर. आई एम फीलिंग सो सफोकेटेड बट इट्स ओके. आई एम गोना कम बैक एंड आई एम गोना ईट सो मच. कल हमने इतना सारा खाना खाया रात को एंड मैंने गुलाब जामुन खाया कल इतने दिनों बाद. आई एम हैविंग कॉफी एंड नाउ आई एम गोना क्लिक सम पिक्चर्स. ऑल्सो
जो हमारा हेयर एंड मेकअप कर रहे थे दे वाज सो स्वीट एंड इतने फ्रेंडली थे. हमने इतनी उनके साथ बातें करी एंड दे वर टेलिंग देयर स्टोरी. दिस पर्सन वाज डूइंग माय हेयर. शी हैड अ बेबी like 2 years back and she was telling how she met her husband and they were friends for 15 years. like इतनी ऐसे पता ही नहीं लगा सब कुछ खत्म कैसे हो गया, कब हो गया. एंड दिस गाइज वाज सो स्वीट एंड आई लव माय हेयर एंड मेकअप. इट्स सो डिफरेंट. मैंने नहीं करा है कभी भी ऐसा हेयर. आई डोंट थिंक सो. एंड इवन विद आईज आई डोंट रियली गो फॉर कलर. सो आज मैंने ग्रीन करा है. ओके नाउ आई एम गोना टेक पिक्चर्स वरना लेट हो जाएंगे. वी आर रेडी. अभी फोन करने वाला था गाइस. वी आर रेडी. लेट्स गो सिसी. Guys, the heels are out. We're ending the night. So tired. I can't even walk. We're gonna have food, guys, and then we're gonna pack. Getting unready. The best feeling ever. I can't even count the number of pins that I have right now. मेरे बाल चिपक गए हैं. मेरे भी वैसे लग रही मैं अभी रेट्रो फिल्म की वही रोल. हाँ रेट्रो. अब सिर्फ एक चीज का इंतजार. फूड. दीक्षा एक्चुअली कितना हेक्टिक होता है ना वैसे. इधर भाग रहे उधर से फोटोज खींचोगे. आउटफिट्स होते हैं. मेकअप का डालो, हेयर करो. गॉड अब ऐसा लग रहा है बस. और पता है मेरे को ना सबसे ज्यादा वन थिंग आई लुक फॉरवर्ड टू इज जब सब कुछ खत्म हो जाता है ना उसके बाद फूड इज द बेस्ट फीलिंग आफ्टर अ लॉन्ग डे. दो थाली एंड पास्ता आल्सो. Kritika orders big and Kritika is gonna eat big. Now guys, I'll talk to you when my food is here. The makeup turned out really nice. I love the lashes. Too much. We're gonna eat everything. We're so tired. Guys, वो बोल रहा था आपने 2 लोगों के हिसाब से थोड़ा सा खाना ज्यादा ऑर्डर नहीं कर दिया, बट उसको क्या पता हमें कितनी भूख लग रही है. Very hungry. Let's eat. It's time to go, guys. Bye bye, Abu Dhabi. Guys, we checked in and now बहुत टाइम बाद टाइम मिला है कि हम टाइम पे पहुंच गए. and we can look around and shop if we want to. I don't think so I want to get anything, but like we're gonna look around. Diksha is getting her favorite perfume. और नहीं मिला. नहीं. मैं वही बोल रही थी कि कितने टाइम बाद हमें एक्चुअली हम आए होंगे. अब हमें एयरपोर्ट पे टाइम मिला होगा यहाँ पर. सच्ची में ऐसा बिल्कुल लग रहा है कितने टाइम बाद ट्रैवल कर रहा है ऐसे लग रहा है. बट